the stage. Jerry Pinto is a noted poet, writer, editor, and translator who lives in Mumbai. He won the Sahitya Akademi Award for his novel M and the Big Whom. आपने मराठी से बलुता, हिंदी से मैंने मांडू नहीं देखा और कोंकणी से अनचाहे लड़के को अंग्रेजी पाठकों तक पहुंचाया है, और आपने बच्चों के लिए कविता पुस्तक टिकल मी डोंट टिकल मी भी लिखी है। सो आज आप सत्र की अध्यक्षता करेंगे और सत्र को आगे लेकर जाएंगे। मैं एक एक करके वक्ताओं को निमंत्रण दूंगी और उनसे आग्रह करूंगी कि काइंडली कम ऑन स्टेज एंड टेक देयर सीट्स। तो पहला न्योता जाता है करुणा शंकर उपाध्याय जी को। आपसे निवेदन है कि आप आइए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए, और जब तक ये ऐसा कर रहे हैं तो तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिएगा। करुणा शंकर उपाध्याय लेखक और आलोचक हैं, हिंदी में लिखते हैं। 35 पुस्तकें प्रकाशित हैं जिनमें कविता, आलोचना और गद्य शामिल है। आपने 15 पुस्तकों का संपादन भी किया है और वर्तमान में आप मुंबई विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। Next, we are very happy that we have Lakshmi Kannan with us. आप ऑडियंस में अभी बैठी हैं, जब आपको कविता पाठ के लिए बुलाएंगे तब आपसे आग्रह करेंगे कि आप आगे आ जाएं। आपका स्वागत कीजिएगा तालियों के साथ जब तक मैं आपका परिचय देती हूँ। लक्ष्मी कन्नन जी इज अ बाइलिंगुअल पोएट। आप आ जाइए। लक्ष्मी कन्नन जी आप आइए, बैठिए। मैं लक्ष्मी कन्नन जी का परिचय देती हूँ, उसके बाद मैं आपका परिचय विस्तार से देना चाहूंगी। That's all right, ma'am. Lakshmi Kannan is a bilingual poet, novelist, short story writer, and critic. She uses her pen name Kaveri. Nadhi Stuti is her latest collection of poems, and Guilt Trip and Other Stories is her latest short fiction in English. Her other books in English include the historical novel The Glass Bead Curtain and Sipping the Jasmine Moon. That's a poetry collection, yeah. She taught English on the faculty of colleges and in IIT Delhi before she joined MNC as a senior writer and language coordinator. We warmly welcome you, ma'am. So meanwhile, if seating is a problem with you, you may keep sitting there, or you may please take your seat on the stage. Next we have with us Lakshmi Shri Banerjee जी। अब आपसे अनुरोध है कि प्लीज मंच पर आइए। An award-winning poet, author, editor, professor of English, radio and TV vocalist, and a former vice chancellor. Dr. Banerjee is also an international senior Fulbright and Commonwealth scholar. She is the recipient of 2 International Lifetime Achievement Awards and the prestigious UGC Postdoctoral Research Award for her groundbreaking work on comparative studies of world women poets, among many other awards. Very warm welcome on stage. अब मैं न्योता देना चाहूंगी श्री मदन कश्यप जी को कि कृपया करके मंच पर आएं और अपनी सीट ग्रहण करें, और जब तक वो ऐसा करें आप तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। मदन कश्यप स्वतंत्र लेखक और पत्रकार हैं। आपके 7 कविता संग्रह प्रकाशित हैं। इसके अलावा कई लेख और आलोचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। आप श्रमिक सॉलिडारिटी और द पब्लिक एजेंडा के संपादन से भी जुड़े हुए हैं। आपको दिनकर राष्ट्रीय सम्मान, नागार्जुन पुरस्कार के समेत कई और पुरस्कार मिले हैं। बहुत बहुत अभिवादन। वर्षा दास, आपसे अनुरोध है कि काइंडली आप आइए, स्टेज पर अपनी जगह लीजिए और तालियों के साथ मैम का स्वागत कीजिएगा। वर्षा दास जी की विभिन्न विधाओं में 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। आप गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में लिखती हैं तथा बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, मराठी और उड़िया से अनुवाद करती हैं। आपकी नवीनतम कृतियां हैं उड़िया साहित्य दर्शन, लुकिंग फॉर गांधी इन आवर टाइम्स। आपकी कविताओं को भारत और विदेशों में कई संकलनों में शामिल किया गया है। आप कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत।
So हमारा पैनल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है and I'll hand it over to the chair. So the session duration is 1 hour 30 minutes. Yes, 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 yes. Yes. अंबिका आनंद जी, माफी चाहूंगी, कृपया करके मंच पर आइएगा. हमारे आज के एक स्पीकर जो है वो एब्सेंट है, तो उसमें ये मेरी तरफ से त्रुटि होगी. बैठिएगा प्लीज. ये बैग्स है ना? नो नहीं है. It's not there. I'll request the organizers to arrange it. They'll get it for you. अंबिका आनंद जी प्लीज मंच पे आइएगा. तालियों के साथ अंबिका जी का स्वागत कीजिएगा. आप द्विभाषी लेखिका, कवित्री, पत्रकार, समीक्षक और अनुवादिका हैं. आपकी विभिन्न विधाओं में अंग्रेजी और तेलुगु में 17 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें अनुवाद भी शामिल हैं. म्यूज इंडिया एक साहित्यिक ई जर्नल की संस्थापक संपादकों में से एक हैं. अंबिका ने इसका प्रमुख संपादक कार्य भी किया है. आपकी रचनाएं कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकलनों में शामिल हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत. आप मंच की शोभा बढ़ाने के लिए ओवर टू यू जेरी. द सेशंस ड्यूरेशन इज 1 hour 30 minutes. Hello and welcome. Thank you all for coming out. If you're sitting at the back, आप आगे आइए ना. It's nice. महफिल सजेगी. आप सामने बैठिए, तो आंखें मिला के हम पोएट्री के बारे में बात कर सकते हैं. If you sit at the back, then I don't know who you are, and I feel that you're backbenchers anyway. Okay. Thank you all so much. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 people. We're going to keep it tight. Each person should speak for about 10 minutes, not more than that, and leave some time at the end for conversation with the audience if you would like some. Can I request Lakshmi Kannan to come up? Lakshmi ji has a problem and would like to speak first. She will be missing the rest of the session. We will excuse her because of her ill health. Namaskar and good evening. Thank you all so much thank you Jerry Pinto and the presenter for making me the first one, which is very, very irregular, but I think this did the trick. The crutch did the trick. So thanks very much. And I thank the Secretary Sahitya Academy for giving me a chance to hear the presentations of these distinguished poets on the stage. And I also thank him for giving me a chance to address this very difficult question of what poetry means to me. What poetry means to me. And it's a very rare chance because it's an intriguing question that for which there is not just one answer. Why a writer chooses to write poetry is difficult, and it comes up, it has me thinking, when do I choose to write poetry? Especially because I write fiction, and I write, of course, book reviews and essays. So when do I choose to write poetry? My honest answer would be, the theme chooses poetry, and then poetry chooses me. It functions out of a paradox. I start a poem on a private personal note that eventually takes me to a public sphere, such as this, where it gets me my readers. And the readers, in turn, connect to the very private realm in my writings because it touches something in their lives. So poetry almost always finds a reader on its own and in its own voice. When that happens, I find it rewarding. It's a self-actualizing experience for me. Writing poetry
has objectified me into myself, and in a way that helps me critique my society and my culture, which is Tamil Nadu, where I was raised. So it is something that I end up critiquing the society that has raised me, and I have become objective to myself when I write. That is why, you know, when you look back on illustrious writers, such as this one from Bengal, Rashishundari Devi, born 1876, what she shared after she wrote her autobiography, Amar Jeevan, was, how did I get this fearlessness? How did I become so very fearless? By writing. So if you want to know more about her works, I recommend a very good book by Thanika Sharkar, Words to Win, to read about Rashishundari Devi's pioneering this thing. So there is then the dynamics of man-woman relationships. It is negotiable, or it could be a battlefield. It depends on how you work it out, very often through poetry, through living and all that. And it is an explorative experience, because once you write a poem, for most poets maybe, the final poem surprises me. Why? Because it has agglutinative qualities. It has a way of working through images that weld connections that I didn't know was there. And it comes at the end of writing a poem. So it is the truth of this experience. But when we talk of truth, we have a dicey deal there. There is a politics of truth. And Michel Foucault, the French historian who we got to read in the 80s, keeps coming back when he says, you know, it's not the power of truth from it's not that you emancipate truth from the power that exists. It is the power of truth that you try to wrest from the hegemony of economic, social, and cultural background. Poetry works out very well for me to get this. So one instance is this hegemony, including, you'll be surprised, feminism. So anthologies of feminism would be incomplete if we do not include the pioneering male writers like Subramanya Bharati, who wrote Pudumai Pen, like A. Madhavaya, who wrote Padmavati Charitram, and how can you forget Tagore, Sharat Chandra, Munshi Prem? Unless you have this holistic thing from them, you cannot. This is the kind of thing. So poetry, finally, what I would say in conclusion is something that occupies a shy, quiet space in my life, something like a prayer. It comes out something like a prayer. Thank you so much for hearing me out. Namaskar. Thank you very much. That was beautifully said. Thank you. Thank you, Lakshmi. That was beautiful. And it was economic with time as well. You had a lot more time. To your credit, we will give it to the others with the joy that poets can be generous with. What poetry means to me, when this question came from the Sahitya Academy, I thought the only way to answer it would be a poem. What poetry means to me, I'm stumped. I can't think. When I don't think, poetry sneaks up on me. That not thinking is not remembering, is not trying, is not pretending, is not imitating. That not thinking is not remembering Jerry, is not pretending to be Jerry, is not trying to be Jerry even, is not imitating Jerry in the hall of mirrors of this world. In my hands, poetry is a stone I throw at my own certainties. Poetry is an unzipping
and an unfolding and a loosening and a dropping of trousers and chaddis, and poetry will take me there to the place where I am a clown. My dignity is around my ankles pooled, my openness such that even my friends will turn away from me. In my life, in my gut, poetry is constipation. Poetry is diarrhea. Poetry is the many microbial me's eating the protein of other poems for me to make my own poetry. Poetry is shit, and shit is the only thing humans do that the earth loves. So poetry from my gut is my answer to the Anthropocene. In my life, poetry is a burning gas. Poetry is a beacon on a hill. Poetry is the North Star. I am guided by its light, but I will never get there. Poetry is the ego, the bloat, the shout, the claim, the scratching at the door, the plea in the throat, the catch in the breath, the relief at inclusion, the rage at underrepresentation, the hurt at exclusion. Poetry is dance. Poetry is doing Kathakali when the words come at me, Kalari Payattu style. Poetry is me in Tribhanga when the words whirl in Manipuri, Lahasya fashion. Poetry is me in Chthonus, Bharatnatyam, connect to the earth and the soul and the soil while the words take flight, defying gravity as ballet. Poetry is match and mismatch. Poetry is metaphor for me, and metaphor is a hint. If I compare poetry to will-o'-the-wisp, I am making the big claim. I am aiming at the quilt, the chadar, the intermingle, jingle, tingle, never single of all of us, and suggesting via metaphor that nothing is separate from anything else. You and me, brother, frère, semblable, bhai, poem, poet, path, condom, condominium, aluminium, mining company, fascist, pharmacist, farmer, all one, all linked, all bleeding, dripping, sliding, slipping, mixing, sexing into each other. What isn't poetry? What isn't poetry? Thank you very much. I may now call upon you, sir, up. मंच पर और मंच के सामने बैठे सभी मित्रों और श्रोताओं और लेखकों को मेरा नमस्कार। ये विषय एक मनुष्य के रूप में इसका उत्तर देना चाहिए कि कविता का मेरे लिए क्या अर्थ है। एक कवि के रूप में इसका उत्तर देना थोड़ा अलग भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा माना नहीं जाना चाहिए। कविता का मेरे लिए जो अर्थ है वो किसी भी आदमी के लिए, किसी भी पाठक के लिए, हमारी कविता पढ़ कर वही है कविता का, ये माना जाना चाहिए। खैर, मैं बहुत समय नहीं लूंगा और समय है भी नहीं, और ये अच्छी बात है कि मैं पहले सोच रहा था कुछ दूसरी तरह से बोलने का, कुछ ऐसे ही, लेकिन दो चार हमारे ऐसे मित्र लोग आ गए हैं, सामने दिख रहे हैं, तो उनके डर से मैं ठीक से कुछ बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि कविता के बारे में बातचीत की जाए। मेरे लिए कविता का अर्थ है जीवन की सार्थकता की तलाश। कविता हम करते क्या है? पाठक भी वही करता है। पाठक भी अपने जीवन को कहीं ना कहीं से, कविता का बहुत गहरा रिश्ता जीवन से होता है, और मनुष्य और मनुष्य का जीवन हमेशा ही कविता के केंद्र में है। प्रकृति भी अगर है तो वो मनुष्य के साथ ही है। हम हिरणी को बाद में जानते हैं, पहले हिरणी जैसी आंखों को जान लेते हैं, तब हिरणी की आंखों को देखते हैं। पहले कवि ने उसको ढूंढ निकाला है। तो जब हम जीवन में आते हैं तो हमारे लिए इन सारे उपमानों से जो जीव हमारे सामने आते हैं उनका अर्थ बाद में आता है। पहले मनुष्य के बारे में जो कहा गया है तो मनुष्य ही सबसे ज्यादा केंद्र में है, और जो कुछ चीजें हैं मनुष्य के आसपास
वह कवियों ने वह काम किया है कि उन चीजों को जोड़ दिया है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य की सर्वश्रेष्ठता को स्थापित करने का काम तो पहले भी कवियों ने किया। चंडीदास ने कहा कि सबसे ऊपर मनुष्य का सत्य है और मनुष्य से ऊपर कुछ नहीं है सत्य। मैं उसमें थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि सारे सत्य मनुष्य में अंतर्निहित है और इस चीज को उद्घाटित करने का काम कविता करती है और यही से कविता का अर्थ हमारे लिए शुरू होता है। मैं चूंकि समय नहीं है और यह विषय ऐसा है कि इसकी व्यापकता और जंजाल में मैं नहीं फंसूंगा। हमारे बीच वरिष्ठ आलोचक आदरणीय करुणा शंकर जी हैं, वो ज्यादा व्यापकता में जाएंगे। मैं सूत्र में कुछ बातें कहना चाहूंगा कि कविता क्या करती है। कविता हमारे अनुभव को समृद्ध करती है। अनुभव तो हमारे होते हैं लेकिन उसको समृद्ध करती है। कई बार कई घटनाएं जब हम देखते हैं तब उसकी तीव्रता को उस तरह नहीं महसूस कर पाते जब हम उन्हीं घटनाओं पर लिखी किसी कविता को पढ़ रहे होते हैं। तो कविता के पढ़ने के बाद हम उस घटना के बारे में और ज्यादा गहराई से सोच पाते हैं। हमारी अनुभूति का जो क्षरण हो रहा है, जो कि ये समय अनुभूति के क्षरण का ही समय है, कविता अनुभूति का संरक्षण करती है, एक तरह से उसे बचाती है। उसी तरह से जो सूचना, ये समय सूचनाओं का हो गया है। बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास होती है, कविता सूचनाएं नहीं देती। कविता अगर उस सूचनाओं को ग्रहण करती है तो उसे हमारे जीवन अनुभव का हिस्सा बनाती है, तभी उसका किस सार्थकता है। जब कविता हमारे जीवन अनुभव का हिस्सा बनाती है तो हमारे सामने वो चीजें आती है। कविता कवि की नहीं कह रहा हूं, पाठकों की भी कल्पना शक्ति का विस्तार करती है। यह ऐसा समय है जब सबसे ज्यादा कल्पना शक्ति का ह्रास हो रहा है। कुछ चीजें रेटोरिक की तरह चल रही। आप देखें, खबरों को देखें, खबरों में क्या हो रहा है। कुछ भी ऐसी चीजें नहीं हो रही है कि जिसमें आपको कुछ नया सोचने, कुछ नया करने की राह दिखाई दे। वो राह अगर दिखाई देती है तो उसके प्रतिकार में भले दिख जाए, लेकिन उसके स्वीकार में, उसके भीतर से वो राह नहीं दिखाई देती है खबरों की दुनिया से, सूचनाओं की दुनिया से नया जाने का। लेकिन उन सूचनाओं को जीवन अनुभव तक ले जाने का काम कविता करती है। सौंदर्य की सतत तलाश कविता में है, मुख्य वही है, और वो सब कुछ जीवन से आया। प्रकृति, जीवन, समय और समाज से कविता का जो रिश्ता है उसके मूल में यही है। सबसे पहले हम मनुष्य को देखते हैं और मनुष्य एक समय में है। हम अपने समय को सबसे ज्यादा दर्ज कर रहे हैं अगर करते हैं कविता में, तो वो भी मनुष्य के कारण कि हम मनुष्य हैं और एक समय में है और हमारा एक समाज भी है और एक प्रकृति भी है हमारे इर्द गिर्द। तो इन सारी चीजों का जो सौंदर्य है ये मनुष्य को केंद्र में रखकर गढ़ा और देखा गया है। एक चीज और है कि ये बात पहले भी कही गई है, मुक्तिबोध अपनी तरह से कहा है। तो कविता संवेदना के साथ साथ ज्ञान का विस्तार करती है जैसा वो कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं ज्ञान की निरपेक्षता का विस्तार करती है। ज्ञान इस समय और विज्ञान भी बहुत निरपेक्ष नहीं रह गया है। विज्ञान तकनीक में बदल गया है और सत्ता के संपोषण में लग गया है, वो विज्ञान नहीं रह गया। तो सबसे ज्यादा उसको जो निरपेक्ष होने की जरूरत है, इस निरपेक्षता का सबसे ज्यादा संकट है और उसका विस्तार कविता करती है। यथार्थ का, सिर्फ यथार्थ की प्रस्तुति नहीं है कविता, यथार्थ का अन्वेषण भी है, यथार्थ की खोज भी है, और वह खोज हमेशा ही अनुभव मूलक होता है। वो ज्ञान मूलक भी हो सकता है, लेकिन तब वो कोई कविता शायद नहीं बनती, अच्छी नहीं बनेगी, वो किसी तरह से चमत्कार ज्यादा होगा उसमें। इस पर बहुत पहले रविंद्रनाथ ने लिखा, प्रतिभा और चमत्कार के अंतर को बहुत विस्तार से लिखा है उन्होंने। उस पर अभी कोई बात करने का समय भी नहीं है, लेकिन हम सब, वो हमारी परंपरा, महान परंपरा के वो बड़े कवि थे, तो हम उनके माध्यम से भी जानते हैं कि ये है। तो अनुभव मूलक अन्वेषण यथार्थ का कविता करती है और उससे जीवन के वो पक्ष भी हमारे सामने आते हैं जो सामान्य देखने में नहीं आ रहे होते हैं। कविता जीवन को, समय को, समाज को जैसे हम सामान्य नजर से देखते हैं उससे ज्यादा बेहतर नजर से, ज्यादा व्यापक नजर से देखने का एक पूरा परिवेश रचती है कविता हमारे सामने में। कविता की यात्रा दो तरह की है।
एक तो समाज से यथार्थ से मनोभावों की ओर, और एक मनोभावों से यथार्थ की ओर। कभी कभी यात्रा विहीन कोई कविता नहीं होती, कविता हमेशा एक यात्रा करती है। या तो हम समाज को देखते हैं, घटनाओं को देखते हैं, जीवन को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, और फिर मनोभावों की ओर जाते हैं। जैसे मुक्तबोध जाते थे, हिंदी में आदर्श उदाहरण के रूप में उन्हें ले सकते हैं। और दूसरा यह है कि हम समाज को देखते हुए अपने मनोभावों को वहां लाते हैं। जैसे नागार्जुन, दो जो तरह के शिल्प में दो कवियों का मैं नाम दे रहा हूँ हिंदी का, ज्यादा नाम विस्तार से नहीं लूंगा क्योंकि ये सिर्फ हिंदी की गोष्ठी भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी बातें ना कही जाए। लेकिन कुछ कवि ऐसे भी होते हैं जो दोनों काम करते हैं सक्षम रूप से, यानी वो मनोभावों की ओर यात्रा और मनोभावों से समाज की ओर यात्रा, दोनों तरह की यात्राएं जो काम करते हैं, वो मुझे सबसे प्रिय वही कवि लगते हैं, शमशेर, जिनमें ये दोनों यात्राएं देखी जा सकती है, मनोभावों से समाज की ओर और समाज से मनोभावों की ओर, इस तरह से। और विडंबना ये है कि शमशेर हिंदी के सबसे कम पढ़े जाने वाले कवियों में, सबसे कम जाने जाने, नाम भले ही लोगों ने सुन रखा हो लेकिन सबसे कम पढ़ा गया। ये एक विडंबना है कि जिसे हम जो मान रहे हैं कि वो सबसे आदर्श है हमारे सामने, उसको सबसे कम जाना गया है। तो कविता का एक संकट यह भी होता है कि हमारे लिए उसके होने का कोई क्या अर्थ है, वो सार्थक तभी होता है जब जनता में कोई आंदोलन हो, कोई बात हो, कोई चीज हो जो उसको लोकप्रिय बनाए। जैसे भक्ति आंदोलन ने उस समय की कविता को लोकप्रिय बनाया, स्वतंत्रता आंदोलन ने उस समय की कविता को लोकप्रिय बनाया। जनता में आंदोलन अगर न हो तो अकेले कविता तो लिखी जा सकती है। कविता हर समय में अपने समय की जटिलताओं को, अपने समय की मुश्किलों को, अपने समय की विसंगतियों को, अपने समय की विडंबनाओं को कविता निरंतर रूप से रखती जाती है। लेकिन वो सार्थक तभी होती है जब जनता के भीतर कोई ऐसा आंदोलन हो जो उससे जुड़ जाए। ये चीजें काफी कम हो गई है, बीच बीच में छोटे छोटे आंदोलन, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, होता रहा है, लेकिन जब वो होता है तभी कविता हमारे सामने आती है। दूसरी एक और चीज महत्वपूर्ण है कविता के बारे में, जो मेरे लिए भी है और सबके लिए होना चाहिए, कि सारी लड़ाई समाज में और देश में और दुनिया में जो होता है, कबीलों के बीच हो, संप्रदायों के बीच हो, जातियों के बीच हो, धर्मों के बीच हो, देश के बीच हो, अलग अलग जितनी लड़ाइयां हैं, उस लड़ाइयों में सब में पावर अगेंस्ट पावर की लड़ाई होती है, ताकत के विरुद्ध ताकत। एक ताकत को हराने के लिए, एक ताकत को के अत्याचार को रोकने के लिए या अत्याचार करने के लिए, दोनों स्थिति में ताकत के विरुद्ध ताकत की लड़ाई होती है। इसमें कविता ही है जो ताकत के विरुद्ध सहअस्तित्व को रचती, कोएग्जिस्टेंस को। पावर, अगर पार्टियों में ऐसा नहीं होता है, कोई पार्टी की सत्ता है, पावर है, दूसरी पार्टी लड़ रही है तो क्या चाहते हैं, उसे भी एक पावर चाहिए, उसको पावर अगेंस्ट पावर है। लेकिन नहीं, यहां पर कविता सत्ता के विरुद्ध, ताकत के विरुद्ध सहअस्तित्व रचती है। और मनुष्य के विकास का जो सबसे उच्चतर मूल्य हो सकता है, ताकत के विरुद्ध सहअस्तित्व रचना, उस रचना, वह रचना कविता करती है। मेरे लिए कविता का यही अर्थ है, कम से कम मैं इन्हीं चीजों को मानता हूँ। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती है और जो कविता को लेकर जो कही जा सकती है, मैंने भी कुछ नोट कर रखा है और भी कहूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा समय समाप्त हो चुका होगा, समय मेरा समाप्त हो चुका होगा। तो फिर इसको मैं समाप्त करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो कविता में अभिव्यक्ति का संकट सबसे ज्यादा रहा है। अभी कविता लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, इतनी सारी बातें करती है, इतनी अच्छी चीजें लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसको लेकर एक बहुत तरह की बातें होती है। और जो कविता पहुंच पा रही है वो कुछ कर नहीं पा रही। हिंदी कविता के बारे में कहा जा सकता है, लोग कह सकते हैं कि हिंदी कविता लोकप्रिय नहीं है, हिंदी में कविता बहुत लोकप्रिय नहीं है, कविता की किताबें नहीं बिकती है, 300-500 प्रतियां बिकती है। और हिंदी में ऐसा कवि भी है जो 1 लाख कविता पढ़ने का 30 लाख रुपया लेता है। तो ये विडंबना क्या है, जहां 30 लाख है वहां कविता नहीं, और जहां कविता है, जहां मनुष्य के जीवन की धड़कनें हम जिन कविता में देख सकते हैं, जिन कविता से हम उस बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं जिसकी चर्चा मैंने की, और आप लोग और बेहतर ढंग से करेंगे, लेकिन मैंने संक्षेप में कोशिश की, वह कविता लोगों तक नहीं पहुंच पाती। उसके पीछे बहुत सारी बातें कही जा सकती, लेकिन कुछ बातें कुछ कवियों के रूप के लिए भी है कि हमने या तो संप्रेषणीयता का पूरी तरह से निषेध किया है, या फिर संप्रेषणीयता को ही मात्र काव्य गुण मान लिया है।
इससे अलग कलात्मक संप्रेषणीयता की जो चुनौती है, कलात्मक संप्रेषणीयता जो होनी चाहिए, भाषा की कलात्मक पारदर्शिता जो होनी चाहिए, तो पारदर्शिता और संप्रेषणीयता के साथ कलात्मक होना अनिवार्य होता है। और जो कला विहीन है वो कविता है ही नहीं, तो वो मंचों पर जितना पैसा लाए उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती इस समय कवियों के सामने है, और इस चुनौती को अगर कभी आगे लेकर चलेंगे तो शायद उनके लिए कविता का अपना और अर्थ होगा, और उनके पाठकों के लिए भी होगा। अन्यथा बहुत निराशा में, एक अगर मैं कवि के रूप में बात करूं तो कह सकते हैं रघुवीर साय की तरह कि न टूटे सत्ता का तृष्ण, मेरे अंदर एक कार तो टूटेगा, तो इससे तो कुछ नहीं होता। हम कम से कम ये संतोष हम कर सकते हैं, जब कवि हैं तो सच बोलने के लिए हमेशा प्रतिशुद्ध हैं, और हमारे भीतर भी एक मध्यवर्गीय कायरता है, वो हमारे भीतर की कविता उसे नष्ट कर देती है, लेकिन ये बहुत सीमित भूमिका है। उसको पूरे समाज में वो करे तो उसकी एक बड़ी भूमिका होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. Varsha ji. Oh, sorry. ये कैसे बंद होगा? चल रहा है? यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। What poetry means to me? I don't remember when did I start writing poetry, but it began with my need to pour out my excitement, pain, anger, passion, dilemma, and concerns. What I do remember is that I started only after moving from Mumbai to Delhi 55 years ago. I loved reading poems on nature, on humanity, on relationships between human beings, between people and natural phenomena. Wars and violence have always shaken me from within, and I have poured my pain through poetry. Since I write in Hindi, English, and Gujarati, the first line, first word, or a metaphor manifests in any of the three languages. My short stories are normally short and often metaphoric. As my sensitivity and sensibility kept growing and changing, my emotional expressions became more rhythmic, more poignant, and often ended on a positive note. I realized that external or internal vibrations are rooted in my mind, which always ponders, reacts, wants answers about happenings in the world where I have no control. I feel like a deeply disturbed spectator, and that too expresses itself in the form of poetry. Umashankar Joshi, one of our towering figures in Gujarati literature, says that poetry is the art of the ear, kaan ki kala hai. It is the mother tongue of the heart, hriday ki matrabhasha hai. So true. All those who read and write poetry would agree with him. I recently received an interesting message. जीवन में क्या करना है यह रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है यह कि इस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारना ये बुद्ध सिखाते हैं। तो बन गई ना कविता। Some poetry platforms in our country invite poets who write in one language, some others from all over the country. And there are those who invite even international poets.
I enjoy participating in them, as it gives me an opportunity to listen to poets in different languages and backgrounds. It chisels my understanding of poetry. I often felt a deep bond with many poets who also go through similar churning. I'm tempted to read a poem that I had recently shared on the theme of water, that is being put together by a famous German poet, Gino Leinweber. The title of this poem is Every Drop is a Song. Water in an ocean, a river, or in a lake, in a pond or a puddle, in a glass or in my palm. Its form or color may change, but what is certain is that it's water, each with its different sound. It roars, flows, trickles, or ripples. I hear the sound tap, tap, tap. Is it on the roof or in the bucket? Or maybe the woodpecker tapping a tree. My eyes could be overwhelmed. Silent tears of grief or joy flowing from my depths of emotions. Water is snow on the Himalayas, rains on the plains, slowly turns into vapor, rising to the sky, hides in the clouds, returns to the earth to gently nourish the land. But when in wrath, destroys it all. The cyclic life of water, with every drop singing a different song. Actually, I can't wait to see the book and read what others have written on water. Interestingly, Gino always requests poet to translate the poem in their mother tongue so that he can put it along with the English one. One day, my daughter Nandita said that, "Ma, why don't you publish all your poems as a book?" I had never even thought about it. But after she suggested, I started collecting my published poems. I chose around 30 from each language. Some I translated myself in other two languages, but even they felt like new poems. One can take the liberty of doing that with one's own poems. The manuscript was ready, but I had no idea who would publish it. When I happened to be at Ahmedabad at the Navjivan Trust, I discussed this with the chairman, Sri Vivek Desai. He immediately offered to publish the collection of my poems in all three languages in one book, and he did it, and here it is. So this is my first collection of poetry published at the age of 81. And I don't know whether any other will come out, but anyways, I continue writing. So I would like to conclude with the French poet and critic Paul Valéry's words. What one wrote playfully, another reads with tension and passion. What one wrote with tension and passion, another reads playfully. Thank you. Hello. Namaste. Good evening to all the esteemed guests, audience,
and the esteemed poets on stage. I hope you will give me some time and lend me your ears. Well, Sahitya Academy has postulated a kind of a question: what does poetry mean to me? I say, what does poetry not mean to me? Because I think people will agree. Poetry is life. And the interaction of the poet with living experiences of every color, of every shade, of every kind in life gives birth to poetry. And as it was discussed in the last session, in ancient India, let us say Bharat Muni's Natya Shastra, he used the word Sangeet. Now, we generally tend to think that Sangeet is music, but Sangeet is not just music, it is the composition and the composite of music, rhythm, जो कहते हैं नाट्य, नृत्य, गीत, काव्य. So we did not, in ancient India, the Indian ethos does not really separate it, but now, of course, it needs to be separated because it has come out into the open, and we also have to think about just not the art of poetry, but the craft of poetry, which we will talk of a little later. So art and craft, but the essence of poetry is, I think, the intercourse, the quitus, the, what should I say? The integration of the inner self and the outer self. We know that poetry is the genesis of all literary expressions, and this makes me very, very perturbed because most of the youth today, even the adults, they say, oh no, we don't understand poetry, as if it's come something from the some unknown planet or something. But then poetry is the genesis of all literary expressions. Prose is just about 500 years old. So when we talk of the epics, the elegies, the divine hymns, you know, for example, the Vedas, we are actually talking of poetry. And poetry is the sum total of this, some kind of divine inspiration, which is not really explicable. It is impalpable. I think the initial inspiration is very elusive. Poetry comes in the middle of the night. It has happened to me so many times, maybe at 2 a.m., 3 a.m. If I don't get up and catch that divine flash, which Shelley talks about, it's surely going to disappear by morning. So it's also like the conception of a child. The seed is there, suddenly the seed comes with a metaphor, because poetry is generally, I believe, good poetry is figurative language. It is not didactic, dogmatic prose broken up into lines and then you call it poetry. No, it must have metaphor, it must have imagism, it must have impressionism, it must have symbolism, so that you convey what you want to convey, but it is in figurative language. So you have to catch that, you know, it comes as in a very hazy form of a metaphor or a hazy form of some event which may have taken place long time ago or may not have taken place. But it is this empathy that works then, you know, somewhere there is an intercourse between, I personally believe, the aesthetic self and the spiritual self. I personally believe that somebody who is not a spiritualist can never be an aesthetist. I mean, aesthetics and spiritualism, I think they are intertwined. Unless you are a deeply spiritual person
unless you go into the depth of things as they are, what I call is deep spiritualism. I don't mean religiosity at all, but spiritualism and aestheticism, somewhere they are combined. So if we go to the genesis of poetry, you know, we hear that poetry took its birth from the hunting songs of Africa when the Africans were hunters. Some say it was the divine prayers, the scriptures and the hymns. So if we see this kind of inspiration is also somewhere a kind of a frenzy. If we talk about the hunting songs, somewhere there's a great frenzy and somewhere there's calm. You know, it's like a river calmly flowing down the mountain and also sometimes ravaging and flooding. So that's poetry. So poetry is life, life is poetry. And I would like to, now this is my 12th book of poems just published in the USA, and I have not launched it, so I'm not going to talk about it too much. It's going to be launched. It's called The Red Woman. Throughout 2024, we don't write poetry like, 2 + 2 maths. We don't. But I was writing other things, but this I don't call it even feminist because that would give it an extra baggage. But some kind of a womanist poetry, which was coming to me. So I was going on writing on women, not just women of India, but women across the globe, the complex lives that they lead, their trauma, their marginalization, their even their divinization in India with regard to the mother goddess. And then suddenly this word red came to my mind, which is the title poem. And it's the title of the book. It's called The Red Woman. And red is a very complex color. It is the color of love. My love is like a red, red rose or whatever. But it is also the color of violence and blood. And then it started ringing in my mind, what about the red light areas of the world? Did this oldest institution of the world, did it really begin with women wanting to lend their bodies to men, a whole lot of men? Or did it take its birth from patriarchy? Of course, it has taken its birth from patriarchy. I'm not going to read from this book because it's a pre-launch, but I cannot resist the temptation of reading The Red Woman, which is the title poem of this book, which comes, and Professor poet Bashabi Fraser has given a wonderful foreword to this book, and so has K. Sachidanandan, all of them. But I will not talk about them because this has not been launched. But I'm going to read The Red Woman. So please bear with me. I am the Red Woman. My home is in Sonagachi, wandering through the unknown maze of winding ways ever lost, through red-lit areas of my crushed heart, sighted, blighted, always in the ruddy shades of pain, often in bridal chambers or in elite lounges or nocturnal bars of piercing love cradles, yet forever in refuge and refuse, in lusty dimness of male stench. My home always in Sonagachi, the waste bin of the world. I am the Red Woman. I arise in darkness, embracing the green gold of trees. I bathe in the lilting shimmer of the moonlit breeze. But my flesh, the racked crevices of my body and soul, so often shredded, battered, tattered in secrecy, splinters of perjury,
played around by you, the unknown and unknown, as my spirit wings through the beauty of the ether. I become the forgetful fairy, yet in cringe and fury against your cruel sport with my womanliness, my home always in Sonagachi, the waste bin of the world. I am the red woman wearing so many shrouds of the goddess or the mother, the caretaker, the sister, wife, daughter, lover, or simply a slave in the garden or the bed, or bower, forever the whore in unwillingness, breathing in blankness of being, a wincing void, an erasure of my own self in robotic tending of my ashen flames, sleeping, cleaning, giving, or caressing in recognition or repulsion. I am nature. I am nature still in forced coitus with primordial savagery. I am nature still in forced coitus with primordial savagery, bestiality masked in varied forms, playing chicanery with me, reduced to a tennis ball or just a doll. My home always in Sonagachi, the waste bin of the world. I am the red woman, the fireball thumping in me, now with my volcanic redness, the inwardness of luminous awakening. I shout with bellowing faith, the weeping resonance of the centuries. I am the weeping resonance of the centuries with purity of my earth and empyrean. I shout, I resonate. Don't you hear me? You are the whore, not I. You have reveled in perfidy, not I. You have traded in lust, not I. You are the harlot, not I. Be it in glitzy Soho of London, be it in the commodity of glass-cased breasts and vaginas sold in Die Wallen of Amsterdam, be it in Reeperbahn that street of putrid license in Hamburg, be it in mellow, garish areas of Malta, be it in Hira Mandi of Lahore, be it in gaudy Kamatipura of Mumbai, be it in tawdry Sonagachi of Kolkata, you are the whore, not I. You have created oceans of blood and tears, not I. You have created oceans of blood and tears, not I. I am the red woman, my home ever encaged in Sonagachi, the waste bin of the world. Is there a lot more? No, just two stanzas. Please don't break my hands. I'll finish it. You carve my images of Ma Durga with the clay of my muddied home. You swim with hardened recklessness in the divine ambience of my Shakti. Only till your festive mood lasts. Only till your festive mood lasts. Then you drown me in your ceremonies of immersion. As my memory flows down the Ganga river, you kill me after your orgy is done, in labyrinths of carcasses of my doomsday and yours. You use my womb to create your children, when you can never love them, but dump in your fabricated orphanages, often called homes. You are the whore, not I. I am the red woman, clad in my red Banarasi sari, my hair swamped with red sindoor, insignia of your patriarchy, my feet and palms inundated with red colors of your nakedness, my forehead darkened with that ruddy orb, the emblem of lawful prostitution, my body and soul soaked in blood as I linger on for the white light of my own eyes, years and immortal tears
to fill my nest with tender illumination. And now the last Thank you very much. stanza. I am the red woman, waiting to explode as the sunflower in yellow transcendence, in forests of wild flame, in conflagration of softness, the red rose in wrath and bloom, as my home in Sonagachi waits ever like me to filter out the briny seas of treachery. I am the redness of your mother's womb. I am the red woman with the third eye. I am the red woman of 10 armed arms. I am the red woman of your desire and worship. I birth your sons and daughters with fondness. I am the red woman of cinders and milk, shining ever in reincarnated harvests of bullied bullion, with a red dot of love still on my forehead, blazing in your murk with my turmeric sunshine. Look, look how the waste bin of the world is soon washed out. Thank you. Would you go next, please? Thank you. I'm sorry that piece. I'm sorry because I thought I had to do नमस्कार। इस सत्र के अध्यक्ष जेरी पिंटू जी, मंच पर उपस्थित कविगण, सामने बैठी हुई विभूतियां, मित्रों, मेरे लिए कविता का अर्थ बहुत व्यापक विषय है। समय बहुत कम है, इसलिए सूत्र वाक्य में कुछ बातें हो सकती है। और ये अच्छा हुआ कि कवि महोदय मदन कश्यप जी का वक्तव्य पहले हो गया। मंच पर मैं विशुद्ध आलोचक हूँ और आलोचक की बात पर कभी कवि को ध्यान नहीं देना चाहिए। कवियों को आलोचक की बात से बचना चाहिए। इसलिए मेरी जो स्थापनाएं हो सकता है कि कवियों को अगर अच्छी ना लगे तो उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। और मेरी दृष्टि में कविता अपने प्रशस्त रूप में जीवन और जगत का पुनः सृजन है, रिक्रिएशन ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स। वह मानवीय चिंतन एवं संवेदना का शब्द रूप कलात्मक प्रकाशन है। जिस तरह जीवन का प्रवाह अनंत है, उसी तरह मानवीय भावों, विचारों, उत्प्रेरणाओं, आकांक्षाओं का भी सतत प्रवाह है। कविता इन सभी का संश्लिष्ट प्रतिफलन है। कविता में सारी चीजें समन्वित रूप में आती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि वही कविता बड़ी होती है जो आवेग से पैदा होती है, जिसमें इंटेंसिटी होती है। मान निषाद प्रतिष्ठान तम अगमः शाश्वती समा की तरह अचानक निकल जाती है। कवि वही बड़ा होता है जिसमें अंतर्दृष्टि और विश्व संदृष्टि होती है। बड़ा कवि हमेशा अपने समय, समाज और सभ्यता का विमर्श प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है। कविता के लिए शब्द की जो विधायक भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ परंपरा में पूरा का पूरा चिंतन ही जो है वो वाक केंद्रित है। और वाक को अपने यहाँ विश्व जननी तक कहा गया। वागेव विश्वाभिहुनानि जग्गे। आचार्य दंडी ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि मंदम तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दवा अह्वयम ज्योतिरा संसार न दीप्यते। यदि शब्द नामक ज्योति संसार में प्रज्वलित न होती तो यह सारा संसार अंधकार से आच्छादित रहता। यानी काव्य जो है मनुष्य की भले ही आदिम उपलब्धियों में से है, लेकिन वह मनुष्य के अंदर के अंधकार को दूर करने का सबसे बड़ा जो है कारक है, सबसे बड़ा माध्यम है। एक अच्छी कविता अपने समय और जीवन के तमाम स्तरों का, बहुस्तरीय जीवन है हमारा, जटिल जीवन है, उसका विमर्श प्रस्तुत करती है। कवि जो है काल चिंतक होता है और कविता काल यात्री होती है, वो काल के साथ यात्रा करती है। इसलिए बड़ी कविता वही होती है। हमारे यहाँ कविता को विद्या और कलाओं को उपविद्या कहा गया है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में काव्य को विद्या कहा है और जयशंकर साथ रामचंद्र शुक्ल ने भी काव्य को विद्या ही माना है। कविता को आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि सारा उपद्रव काव्य को कलाओं के भीतर लेने के कारण हुआ है।
तो कहीं ना कहीं इस पर बहुत ज्यादा जोर रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि आज भी जो कविता का आदर्श रूप है वह वेद है, वह उपनिषद है, वह रामायण है, महाभारत है, कालिदास का साहित्य है, भवभूति का उत्तर रामचरितम है, पूरा भक्तिकालीन साहित्य है, प्रसाद और निराला गेय और मुक्तिबोध का काव्य है। तो कहीं न कहीं कविता का जो एक आदर्श प्रतिमान हो सकता है उसमें हमें यह देखना है कि जिसमें ज्ञान विज्ञान दर्शन अध्यात्म लय छंद जीवन जगत और संगीत का भी संश्लिष्ट चित्रण होता है। आचार्य शुक्ल ने कहा था कि नाद सौंदर्य से कविता की उम्र बढ़ती है। आज भक्तिकालीन कवि कर्नाटक संगीत तक पहुंच गए हैं और जब हम लोग साक्षात्कार वगैरह लेते हैं तो पूछते हैं कि आज के 5 कवियों का नाम बता दीजिए, तो न बच्चे बता पाते हैं न प्राध्यापक का साक्षात्कार देने वाले बता पाते हैं। तो ये एक जो संकट आया है कहीं न कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कविता श्रेय और प्रेय का समन्वित रूप है, वह विश्व मंगल के लिए संकल्पित होती है, उसमें चराचर जगत के कल्याण की कामना होती है। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई तुलसीदास की तरह जब हम संपूर्ण विश्व के संपूर्ण चराचर जगत के मंगल की कामना करते हैं तो सही दृष्टि हमारे सामने आती है। मित्रों, मैं 1-2 उदाहरण दे करके अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। एक बार महावीर साहब द्विवेदी जो है कविता की तलाश में गए तो उन्होंने कहा कि कविता कहाँ कहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सुरम्य रूपे रसराशि रंजिते विचित्र वर्णा भरड़े कहाँ गई, तलाश कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि अलौकिकानंद विधायिनी महाकवींद्र कांते कविते कहाँ गई, कहाँ मनोहारी मनोज्ञता गई, कहाँ छटा छीड़ हुई नई नई, पता नहीं है भुवनांतराल में कहाँ गई तो रूप रम्यता। सजीव होती यदि जीव लोक में कहीं कहीं तो मिलती अवश्य ही, कहीं कहीं छंद कहीं सुचित्रता, कहीं अनुप्रास विशेष में तुझे सुजान ढूंढे अनुमान से सदा, परंतु तू काव्य कले कहाँ वहां, मतलब नहीं मिल रही है। फिर कहते हैं सुरम्यता ही कमनीय कांति है, अमूल्य आत्मा रस है मनोहरे, शरीर तेरा सब शब्द मात्र है, नितांत निष्कर्ष यही यही यही। ये भी शब्द की रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम को ही जो है विशेष महत्व दे रहे हैं। कविता में ध्यान रखिए शब्दों का विशिष्ट निवेश या विनियोग महत्वपूर्ण है। जैसे हम पैसे का अच्छी तरह से निवेश करते हैं वैसे कवि जो है शब्दों का बहुत विशिष्ट विनियोग करता है। वह जीवन के प्रति स्वीकृति का भाव भरती है, वह आगामी मनुष्यता के प्रति विवेकपूर्ण संकेत करती है। इसलिए उसमें बिंबों प्रतीकों संकेतों उत्प्रेक्षाओं के आधार पर जो अर्थ सृष्टि होती है, अर्थ विधान होता है, वही जो है कविता को आगे ले जाती है, उसकी उम्र को बढ़ाती है। कविता में लयात्मकता आज गायब है। आज एक प्रकाशक ने कहा कविता तो रसातल में पहुंच गई है, कविता कौन पढ़ता है। तो मतलब ये जो स्थितियां आ रही कहीं न कहीं उसके लिए हम सब भी जिम्मेदार हैं। इसलिए बृहत्तर समाज कविता से अगर कट रहा है तो उसके पीछे कहीं न कहीं हमें यह देखना होगा कवितापन जरूरी है। आज का कवि जो है 21वीं सदी का नायक देने में असमर्थ है, वह अपने समय और विश्व सभ्यता का विमर्श नहीं प्रस्तुत कर पा रहा है। आज भी अगर हम कामायनी के पास जाते हैं और यह कहते हैं कि वहां एक साथ आप ऋग्वेद भी देख सकते हैं कि विश्व देव सविता या पूषा सोम मरुत मंग चंचल पौमान वरुण आदि सब घूम रहे हैं किसके शासन में अम्लान। वही कवि आगे चलकर कहता कि अपने में भर सब कुछ कैसे व्यक्ति विकास करेगा, यह एकांत स्वार्थ भीषण है अपना नाश करेगा। औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ। जब वही कवि आज तृतीय विश्व युद्ध का आसन्न संकट है, द्वितीय विश्व युद्ध के आसन्न संकट के समय लिखता है कि विश्व विपुल आतंक त्रस्त है, अपने ताप विषम से फैल रही है घनी नीलिमा अंतरदाह परम से। जो राष्ट्रों के बीच ईर्ष्या द्वेष का ज्वालामुखी तैयार हो रहा है, जब वो फट पड़ेगा तो तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, ये जो संभावना है। आगे वही व्यक्ति जब तानाशाहों की हिटलर और मुसोलिनी की चर्चा करते, लेकिन वो हमारे समय के किम जोंग पर, सी जिनपिंग पर, पुतिन पर लागू हो सकता है कि निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता, संघर्ष कर रहा है सबसे विराग सब पर ममता। तो ये कविता है। जैसे बड़ी कविता विश्व सभ्यता का विमर्श करती, तो वो व्यक्ति जब लिखता है कि यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि, अनजान समस्याएं गढ़ती रचती है अपनी ही विनष्टि। फिर कहते हैं कोलाहल कलह अनंत चले। इस युग में कोलाहल और कलह दो चीजें, छोटी छोटी बात पर विवाद है। कोलाहल कलह अनंत चले
एकता नष्ट हो बढ़े भेद, अभिलषित वस्तु तो दूर रहे, हम मिले अनिश्चित दुखद खेद, सब कुछ भी हो यदि पास भरा, पर दूर रहेगी सदा तुष्टि, दुख देगी यह संकुचित दृष्टि। तो अपनी इसी संकुचित दृष्टि से जो आज की विश्व मनुष्यता पीड़ित है, कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, कविता अपनी कलात्मक प्रस्तुति में कलात्मकता की चर्चा मदन कश्यप जी ने भी कही, बहुत काफी है, लेकिन उतना यहाँ कहा नहीं जा सकता। तो मैं एक दो बातें केवल कह रहा हूँ कि अपनी कलात्मक प्रस्तुति में जो है महत्वपूर्ण होती है, और कविता से कलात्मकता का या प्रस्तुति की मौलिकता का बने रहना बहुत जरूरी है। और तभी जो है कविता जो है, जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि सभ्यता के विकास के साथ साथ कवि कर्म कठिन होता जाएगा। तो आने वाला समय और ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। आने वाले 25 वर्षों में जब हम विकसित भारत 2047 देख रहे हैं, तब तक चैट जीपीटी और कृत्रिम बौद्धिकता के माध्यम से कवि कर्म कहीं अपदस्थ न हो जाए, इस प्रकार की चुनौती आने वाली है। तो हमें वापस कल्पनाशीलता की ओर, सृजनात्मकता की ओर, जो काव्य के परंपरागत उपकरण हैं, जो उससे मिलने वाला आनंद और रस है, जो उसके माध्यम से मनुष्य के मन का उन्नयन किया जाता रहा है, उन सारी भूमियों की ओर वापस लौटना पड़ेगा। हम लघुता के प्रति दृष्टिपात कर रहे हो, सही है, लेकिन क्षुद्रता के अन्वेषण में इतने ज्यादा हम लीन हो गए कि हम पूरी तरह से विराटता और संपूर्णता से मुख मोड़ बैठे हैं। इसलिए उससे बचने की जरूरत है। मैं केवल अंतिम बात कह करके मुक्तिबोध के शब्दों में सृजनात्मकता जो जरूरी है, वो कहते हैं कि नहीं होती कहीं भी खत्म कविता, नहीं होती वह आवेग त्वरित काल यात्री है, न मैं उसका नहीं करता पिता धाता, वह कभी दुहिता नहीं होती। कविता कवि की पुत्री नहीं, ध्यान रखिए, कविता सर्जना है। कहते हैं कि परम स्वाधीन है वह विश्व शास्त्री है। तो कविता विश्व शास्त्री है, वह संपूर्ण विश्व का एक प्रकार से मानक तैयार करती है, संपूर्ण विश्व का संस्कार करती है, विश्व मनुष्यता के प्रति विवेकपूर्ण संकेत करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। Good afternoon, everybody. With sincere gratitude to Central Sahitya Academy for giving this opportunity to me, I extend my hearty greetings to the respected chair, Jerry Pinto, and the esteemed poets on the dais. Before talking about what poetry means to me, I wish to talk about syllables and words that make poetry. There is a saying, amantram aksharam nasti. There is no syllable which is not a mantra. That is, each syllable is sacred. I believe in this maxim. And as T.S. Eliot said, words strain, crack, and sometimes break under the burden, under the tension. They slip, slide, perish, decay with imprecision, will not stay in place, will not stay still. Hence, I follow the rule, handle words with care. As a poet, I believe in the power of each syllable and I handle my words with care. Words possess a transformative energy capable of bridging gaps, fostering understanding and capturing intangible nuances of human experiences. As a writer, I step into any genre with love and respect for the written word. The creative world of writing has a wide spectrum of genres, and each one has its own splendor. But poetry presents a profound testament to the creative power, a journey both personal and universal. Both personal and universal, that can cross linguistic and cultural boundaries. Through poetic lens, we can see intricate tapestries of human spirit. I was drawn to writing right from my adolescence. My father, despite his busy schedule as a senior bureaucrat, was a voracious reader, and he set a powerful example.
He made me realize that by diving into books, one can spring up as a fountain of knowledge and joy. Reading and writing cannot be separated. Reading is breathing in, writing is breathing out. My first English poem got published when I was 14 years old, and that was the first step of this happy trajectory. Poetry for me is a beautiful mosaic of my feelings and thoughts that flow out creatively, sometimes intensely, sometimes more subtly. A solitary contemplation in a sublime way is my preferred way to express myself poetically. All the stuff life is made of, and the soft nuances of living that touch my heart, my inner subjectivity responding to them, results in me penning my poems. How they come out and how they turn out to be is a mystery to me too. Certain set of emotions and notions are universally valid, and their appeal remain intact, regardless of place, time, and culture. Poetry is supposed to deal with eternal truths of eternal truths of life like love, desires, dreams, death, etc. On the whole, poetry must paint a picture with creative imagination and bring in a seminal bonding between life and literature, which always was and is. Pablo Neruda, the Chilean poet, said, "If they ask me what my poetry is, I must say, I do not know. But if they ask my poetry who I am, it will tell them." These words by the Nobel Prize winner hold true for many a poet or a writer. I wish to present a poem of mine that is based on the birth of a poem in me. It is titled Genesis. You promised to fill my vacant moments with words of blood-red passion. You promised to fill my vacant moments with words of blood-red passion. You don't seem to come out quietly and easily. You don't seem to come out quietly and easily without evoking a restlessness in my heartbeats, without evoking a restlessness in my heartbeats as that of a trapped butterfly's wings. You flow in my veins ceaselessly. You flow in my veins ceaselessly like a river in spate. Yet you wait for the wave to rise in my heart. You wait for the wave to rise in my heart and deluge me in its power. Only you can take me back home, unleashing my real self. Yet you wait for the intense hunger to grow in my mind and gobble me. When the waiting becomes unbearable, without any warning, you suddenly emerge. When the waiting becomes unbearable, without any warning, you suddenly emerge. You gather, you stir up, you clad yourself and step out, but not before filling me with life-giving elixir. And I become more alive when I become you, a poem, and my life becomes a journey of emotions and luminescence. Poetry is a medium that allows you to travel unhindered, where the free mind is at its peak to be able to create unknown, unexplored worlds, using words that dance to the poet's whims and resonating along after the lines are read. I wish to quote the American poet Joy Harjo's words. Bless the poets, the workers for justice, the dancers of ceremony, the singers of heartache, the visionaries, all makers and carriers of fresh meaning. We will all make it through despite politics and wars, despite failures and misunderstandings. There is only love. The world needs love and harmony amidst the chaos that is pervading all over. Let's spread it through poetry. Thank you all. Thank you so much.
The Sahitya Academy, I think, has to be thanked for thinking up such a wonderful prompt, I would say. It seems to have sent us off on a series of very interesting little discussions that we all brought varying and independent views to this situation. I think Lakshmi started off with a wonderful analysis of her process and also of her politics in a way, by bringing feminism into it and talking about the relationship between her times and her words, so that we were led through a process and a viewing of the world. Our next poet talked beautifully about the way in which poetry and society interacted with each other, if I'm not mistaken. What is the role then of the poet in times of difficulty? What is the role of the poet when we are faced with a situation when speaking, and poetry we all know has always spoken truth to power, and even not spoken truth to power at some times in its history, because there was a time when poets were scribes, and you were a scribe to a great king or a conqueror, and you could not really tell the truth about him. You had to actually produce a series of flattering lies. We are lucky in our iteration of what is called a poet. We are outside now that sphere of influence. We no longer have that patronage. But because we do not have patronage, because we do not have huge amounts of money being thrown at us or our living being given to us, we are actually free to speak the truth that we see, the truth that we feel. I think Varshaji, you gave us all a beautiful inspiration in that moment when you talked about your first book coming out at 81. I have an old aunt who, wants to write, and I keep telling her about Grandma Moses and how she started painting when she was in her late 80s. And by the time she was in her early 90s, she was in all the great museums of the world. And she was acknowledged as a great master. And then I tell her about Diana Athill, who wrote Stet when she was in her late 80s, a beautiful book about how an editor's life is shaped. And it went to the top of the bestseller lists. And after that, she wrote another series of books. My aunt would always reply saying, but these are Western women. Thank you, Varshaji. Now I have someone to say, there is a local representative who has her first book of poetry out at 81. It's never too late. We had a wonderful incursion into the world of the red woman, the sex worker, the one who is branded by patriarchy and then answers proudly to patriarchy. I am not the whore, you are. Our last two speakers both spoke eloquently about the nature of poetry in their lives, their interactions. I love the way so many of our absent friends, of poets who have gone before us, Shamsher, T.S. Eliot, I think someone else mentioned Mukti Bodh, right? Mukti Bodh, for instance, died without having a book of poems to his name. The first collection of one of the greatest of Hindi writers of poetry came out posthumously after his death. Each time we hold our books of poetry to ourselves, each time we look at a book of poetry that we've written, we need to remember Mukti Bodh. We need to think about those moments and those times when publishing was not quite as easy, when publishers were not available, when poetry books were simply not there. I think for our Hindi writers, I have to say to you, I am deeply envious, because I find that the Hindi poetry is always kept available. If you walk into Rajkamal or you walk into Vani and you say, I would like to buy a book of poems by some writer who is long gone, they have still kept those books available and at really reasonable prices. 135 rupees and you can get Agyeya's Pratinidhi Kavitai. Ask an English poet if they are kept in print.
Lakshmi. No one, I mean, the books come out, and then if you don't move quickly, if you don't buy the book when it is in its first edition, it's likely you're not going to get an edition until the person has a collected. And the collected poem often comes out as a posthumous collection. The Sahitya Academy has done some wonderful work over the years in translating poetry and bringing all of us together at sessions like these, at moments like these, in books, in anthologies, and I hope that it will continue to do so in the future. I'd like to thank all of you for being a wonderful, attentive audience. I'd like to thank the Sahitya Academy for giving me this opportunity. Thank you all very much. Please go away, go look for a book of poems, buy a book of poems, keep it by your bedside, read it before you go to sleep in the night. I promise you, your dreams will be so much more interesting. Thank you all very much. Thank you, Jerry. Thank you, the distinguished panelists. I would request you all to kindly form a line here, gather here for a group picture. With this, we conclude our last session of the day. अब आप सभी से हमारी मुलाकात होगी कल सुबह यही 10 बजे.